Hello everyone, my name is Astha and today we are going to discuss a very important topic that is email etiquettes. तो आप सबने देखा होगा कि हमारे पास दो तरीके के स्पेसेस होते हैं. वन इज फॉर्मल एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल. फॉर्मल एज इन जब भी हम मे बी इन ऑफिसेस बात करते हैं या फिर स्टूडेंट्स अपने फैकल्टी से बात करते हैं तो वो आता है फॉर्मल स्पेस में, जहाँ पे हमें अपने वर्ड्स, हमें किस तरीके से बात करना है सामने वाले से, वो ज़्यादा हमें कॉशियस वे में बात करनी होती है. लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मॉम डैड से बात करते हैं और मे बी व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स, राइट, सो you all are in a very casual mode, so that is called informal way. So basically, when I talk about email etiquettes, so that comes under the formal means of communication. Now today, let's understand that when we write an email to someone, so what are the things that we need to keep in our mind? But उससे पहले आप सबको पता होगा कि आजकल हम डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं. You all are very much aware about Facebook, WhatsApp, Instagram and other social media platforms. तो आप जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके मन में चलता है यू जस्ट टाइप इट डाउन एंड दैट्स इट, राइट. बट जब आप किसी को ईमेल लिखते हैं, लेट्स से यू आर राइटिंग एन ईमेल टू योर एचओडी, लेट्स से, राइट, सो देयर यू हैव टू कीप इन माइंड, you have to be very cautious that what you all are writing. Also, you might be watching that when you post something on the other social media platforms which are an informal way, let's say Facebook and Instagram, so there you can write at lengths. Many people write like a big post, right? But when it comes to a formal means of communication, then we should be very precise and short. नाउ ईमेल ही हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम पे नोटिस बोर्ड्स हुआ करते थे जहाँ पे हम नोटिस लिख के रख देते थे और सारे बच्चे रीड करते थे. इवन इन कॉलेजेस वी डू दैट. बट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने का और एक नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द डिजिटल मीडिया, आप सबको पता है कि हम जस्ट एक क्लिक पे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर everyone has to be informed individually, or maybe there might be some error and we cannot reach out to a vast people at once. So that is the first benefit of email, that at just one click you can inform all the people sitting out there in your formal space. Now the second thing, better clarity. When you are talking about email, so there whenever we write in a very clear and precise way. And most importantly, we try to use bullet points, not big paragraphs, or if we are using paragraphs, that should be very short and very precise. Now the third thing is that definitely digital platform is paperless. Okay, so we can save papers, and that is more eco-friendly, that we all are promoting right now, that we should always do something which is good towards the nature. So these are the various advantages of using email. Now let's come to how to draft an email. हम सबको पता है कि ईमेल लिखते कैसे हैं, बट एक प्रॉपर वे होता है. हर एक टैगलाइन जो भी ईमेल में होती है वो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए. So let's start with the receiver, to whom you are sending the mail. So there you will see some sections out there. Whenever you click on the compose and whenever you draft an email, so the first section that comes is to. So to means to whom you are sending the mail. That is the most important person. Also, you will write down the email to that person to whom you want to take some action on the information that you are sharing with. So let's say if I am a teacher and I want to write something to the HOD, right? So there the HOD will be in the to section, because I want my HOD to take some action on the thing which I am telling him maybe. Now next come you will see a CC part. बेटा बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि CC क्या होता है, BCC क्या होता है, राइट. सो CC इज कॉल्ड कार्बन कॉपी. आपको वर्ड से ही पता लग गया होगा. कार्बन कॉपी एज इन आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर की शीट आती है, उस पर हम कॉपी करते हैं. सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो कार्बन कॉपी में क्या होता है कि हम उन लोगों को मेल करते हैं जिनको हम ये तो नहीं चाहते कि हम वो एक्शन ले, जस्ट हमें उनको इन्फॉर्म करना होता है. सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट
but they are not on that much priority list in comparison to the people who are there in the 2 section. So then comes the CC. Now next one is the blind carbon copy. As the word itself suggests, blind मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए उनके names जिनको हमने भेजे हैं. So these are the people to whom we can say that we secretly send the message. We don't want the other people to know that इनको messages भेजे गए हैं. Now after that comes the subject line. सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ही सोचो कि अगर मैं किसी अथॉरिटी, अ पर्सन इन अथॉरिटी को मैं मेल सेंड कर रही हूँ, सो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ इन अथॉरिटी, तो उनके पास तो दिन के शायद 100 से ज़्यादा मेल आते होंगे, बट क्या वो हर एक लोगों के मेल को ओपन करके रीड आउट करेंगे? डेफिनेटली नॉट. सो हाउ द मेल्स आर बीइंग फिल्टर्ड आउट, इट डिपेंड्स ऑन ए सब्जेक्ट लाइन. तो सब्जेक्ट जितना क्रिस्प होगा, जितना प्रिसाइज होगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं मेल में, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके सब्जेक्ट को. एंड सब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 वर्ड्स. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट योर mail will go unread by the person to whom you are sending it. So make sure that आपका subject होना ही चाहिए and that should be very clear. Okay, now let's come to the salutation part, that is the body. So the body of the mail consists of few things which I am going to discuss right now. So first is the salutation. Now salutation अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, like dear sir, dear ma'am, या फिर dear Mr. Jha, let's say, right? Okay, so अलग अलग तरीके हैं, but what we prefer is dear Mr. Saxena, let's say, or dear Mrs. Saxena, right? So this is how we just address a person in a professional environment. But let's say you are a student and you're writing a mail to your let's say HOD or your principal sir, so there you can write respect the dear sir or dear ma'am. Okay, after that your body of the mail, very important. So जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, सिर्फ ईमेल ही नहीं, जब मैं राइटिंग की बात करती हूँ तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं आपके, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन. कभी भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने मेन पॉइंट से नहीं स्टार्ट करते. फर्स्ट ऑफ ऑल you should give a little idea about what your mail is going to be about. Okay, so in the introduction you will write what are you writing, what is the purpose of writing the mail. So in the introduction you can mention that. Then in the body you can mention in detail about what you are going to talk. ओके, सो लेट्स से आप एक मेल लिख रहे हैं जहाँ पे आपको अपने क्लासेस में कुछ चेंजेस लाने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द सब्जेक्ट लाइन? Regarding. Okay, the word regarding should be there. That is a very common way of writing a subject. Regarding changes in our class, okay, or classroom. In the introduction line you can write down, I want to bring, sir, I want to bring to your notice that we want some changes in our classroom. Then in the body part आपको जो भी अपने classroom में changes लाने हैं, let's say board नहीं ठीक है या फिर कुछ wire issues हैं, live wires हैं, right? तो जो भी main pointers हैं, in detail वाले pointers हैं, वो आप अपने body में लिखेंगे. After that comes the ending part where you just close it. So closing line is very important. In the closing line you should be thankful, okay, and at the end we can end with thanks and regards. Now here many people write yours faithfully, yours truly, but now this is not accepted much. Why? Because this seems to be overly formal. So now we have to use the words like thanks and regards, then your signature, name, and any of your contact details if they are available. So this is how we write an email. Now I hope that you have got a very clear idea about why we should use email. Also, second thing, how do we write an email? Now instead of email there are many other digital platforms through which we can communicate in a professional environment. So there are many WhatsApp group, that is the most common thing that we are using nowadays. So we have official WhatsApp groups and we have unofficial WhatsApp groups. Like my family group is my unofficial WhatsApp group, but when I talk about my office WhatsApp group, so that is my formal one. So there also there are some digital etiquettes that need to be followed, which many times we don't. For example, texting on the official WhatsApp groups regarding any of the things at late night. So late night conversation should be avoided.
Second thing, we should not always text on the official WhatsApp group for each and everything which is even not important, because then the most important important messages go unread. So that is one thing you need to take care of. Like this, we have different aspects, different etiquettes of using different platforms in digital media. So about that, we will be talking in detail in our next sessions. So I hope you enjoyed the session, and now I feel that you would have got a little idea about what is digital etiquettes and how do we have to behave in our professional environment when we are writing an email or to whom we are writing. Thank you so much.